Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel. I hope you guys have been well. I'm sorry I have been missing for the last few weeks. I am going to explain everything in this video now. I'm just going to speak a little bit in Urdu and then I will come back to talking in English if that's okay. So I hope आप लोग सब ठीक हैं. Sorry कुछ हफ्तों से मैंने कोई वीडियो नहीं लगाई ये वो तो अगर आपने मेरा YouTube स्टेटस देखा है या मुझे Instagram पे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मेरा जो बेटा था वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया था. कोविड हो गया था. 9 years old माशाल्लाह. तो वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस था एंड तकरीबन 2.5 हफ्ते हम हॉस्पिटल में थे. लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि खैर खैरियत से हम घर पहुंच गए. एक टाइम था कि ये भी था कि पता नहीं हम घर आते हैं या नहीं, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सारा कुछ ठीक हो गया और अभी घर आ गया मेरा बेटा. तो इस वजह से वीडियो कोई अपलोड नहीं कर पाई, लेकिन इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा अपडेट किया था. तो आप लोगों की दुआएं बहुत ज़्यादा मिली हैं मुझे यहाँ यूट्यूब पे भी, तो थैंक यू सो मच इसके लिए. अभी ये जो वीडियो है इस पे सिर्फ मेक ओवर है, वॉइस ओवर आज नहीं किया. आज बस एक दो और बातें करनी थी तो मैंने सोचा चलो आप साथ साथ वीडियो देख लें एंड साथ साथ आप मेरी बातें थोड़ी सी सुन लें. तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है अभी घर पे, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम आउट ऑब्वियसली ले रही हूँ. तो थोड़ी सी वीडियोस मैं कोशिश कर रही हूँ कि ऑब्वियसली हर हफ्ता लगा दूँ या अगर ज़्यादा लगा सकती हूँ. लेकिन एक बात पूछनी थी आप लोगों से कि मैंने कुछ महीने पहले पूछा था पाकिस्तानी फाउंडेशंस के बारे में. तो वो ऑब्वियसली जो वीडियो है थोड़ी सी पुरानी हो गई है, लेकिन अभी कोई है जो चाह रहा है पाकिस्तानों में लिए फ़ाउंडेशंस लेके आ सकते हैं. इसलिए आप सबसे मैं पूछना चाह रही थी कि अगर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें कि कौन सी फाउंडेशन मैं ऑर्डर करूं. एक तो काशिश की ऑब्वियसली मैं करूंगी, एक दो मुझे चाहिए थे प्रोडक्ट्स. आई थिंक मुसरत मिसबा मैं सुनती हूँ काफ़ी ज़्यादा, उनकी कोशिश करूँगी ऑर्डर करने के लिए बेसिस. एंड अगर और कोई है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बोला था, लेकिन अगर इस वीडियो के नीचे कर देंगे तो मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि कौन सी प्रोडक्ट्स मैं ऑर्डर कर लूँ. अगर उनकी अपनी कोई वेबसाइट्स वगैरह हैं या कहाँ से मैं ले लूँ या कहाँ से मैं ऑर्डर कर सकती हूँ तो वो भी बता दे तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी हेल्प हो जाएगी. फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए वो प्रोडक्ट्स रिव्यू करूँगी एंड इस्तेमाल करूँगी एंड देखूँगी, क्योंकि मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की, लेकिन मुझे पता है कि पाकिस्तानी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा फुल कवरेज है. तो अच्छा होगा कि मैं वो ट्राई कर लूँ. अगर वो भी कोई प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप कोई ग्लिटर्स या आई शेडो जो कुछ भी रेकमेंड करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बता दें. दूसरी चीज़ है कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करना चाहती हूँ जहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जैसे एक मेकअप कोर्स छोटा सा नॉट बहुत ज़्यादा इंटेंसिव, लेकिन छोटा सा कोर्स करना चाहती हूँ. लेकिन मैं ख़ुद कैमरे के सामने मैं इतना कंफर्टेबल फील नहीं करती. तो अगर मैं सिर्फ अपने हाथ दिखाऊँ या ऐसे लिख के या जो भी आपको दिखाती हूँ, क्या आप लोग इसमें खुश होंगे? बस ये पूछना चाह रही थी. एंड और भी अगर कोई वीडियोस हैं, अगर आपको हेयर स्टाइल्स चाहिए या कुछ भी और आप कोई मुझे मतलब एडवाइस करना चाहते हैं कि किस टाइप की वीडियोस आपको चाहिए तो आप मुझे बता दें. क्योंकि अभी ये जो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स है मेरा फोकस यूट्यूब पे होगा, क्योंकि पहले आपको पता है कि लास्ट 6-7 मंथ्स जुलाई से लेकर दिसंबर तक बुकिंग्स के साथ काफ़ी बिजी होती हूँ, तो फिर वीडियोस ऑब्वियसली कम होती थी या इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता करने के लिए. तो अभी ये जो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स है मैं ज़्यादातर घर पे रहूँगी, अपने बेटे को देखभाल करनी है. सो थोड़ा सा यूट्यूब में मैं ज़्यादा फोकस कर सकती हूँ एंड इंशाल्लाह आपके लिए वीडियोस लेके आ सकती हूँ ज़्यादा. तो आप प्लीज़ मुझे बता देना आपको क्या चाहिए, किस टाइप की वीडियोस चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो सारा कुछ आपको दिखा दूँ. तो अभी आपको वीडियो आप बस देखें ये वाली, आप अपने प्रोडक्ट सारे मैंने लिखे हुए हैं, आपने मेरे ये जो टेक्निक्स है काफ़ी ज़्यादा देखे हुए हैं, तो इसलिए इस वीडियो में वॉइस ओवर नहीं है. बस मुझे ये था कि थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन आपको दे भी दूँ और ले लूँ आपसे. तो इंशाल्लाह प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना एंड इंशाल्लाह फिर अभी सी नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी अभी. So guys, I just wanted to explain that I have been missing for a few weeks. Basically my son had COVID, he's 9 years old, and we ended up being in hospital for 17 days. Now this is one of the worst times of my life, to be honest with you, and it was really a very, very difficult time, but alhamdulillah, with everyone's prayers and du'as, we came home. He suffered quite a lot, and recovery will take a few months, but inshallah we're home safe and sound, and inshallah he will be back up and running very, very soon.
So I just wanted to explain to you guys, obviously, that I have been missing due to that. I mean, I did take a little bit of a break during the Christmas period in the holidays just to spend time with my family, and then suddenly he became really, really ill. I mean, I can't explain what we went through, but thank God, you know, everything is okay now. Please do stay safe yourselves as well, because I know there's a lot of people who don't take it maybe seriously, and I saw firsthand how serious it can be. My son was fit and healthy, and it just affected him so badly. He ended up being on a ventilator. There was a time when they didn't think he'd make it. So yeah, do stay safe. Sorry, I didn't want to get too emotional, but you know, I just wanted to explain that obviously, you know, we do all need to stay as safe as possible. But anyway, moving on to my videos. Basically, I haven't done a voiceover for this particular video because I just wanted to just speak to you guys about a few things. So you can just see, I mean, the techniques and everything you've seen in my previous videos. So the products are still listed here, so you can watch that as well. I just wanted to ask you guys, I'm actually going to be spending a lot more time at home now, so I'm going to be focusing a lot more on my YouTube videos as well. So I've just cleared my diary with bookings just for a little while, just to obviously be there for my son and be at home a little bit more. So I wanted to start doing like a series, like a makeup course, to kind of like teach you guys from start to finish when it comes to like bridal makeup. Now, I didn't want to do something like a proper professional course where you get trained up as such, because I can't be covering all those topics, but I can do like a bit of a crash course and explain things from my point of view and from my experience. So I just wanted to ask you guys, like, I'm not very comfortable in front of the camera, so I just wanted to see what you guys, or how you would feel if obviously I was doing it and kind of like mostly showing my hands and maybe writing stuff down and giving you all the information in bullet points and things like that, and whether you'd be okay with that. Also, if you want to give me suggestions of videos that you wanted from me, I am going to be focusing a lot on hairstyles as well, and giving you starting from very basic hairstyles and going up to very, very intricate bridal hairstyles, and showing you exactly what I do and how I do it. Now, most of you know I have been doing this for about 18 years now, so a lot of what I do comes from experience and not from actually like courses that I've done. So, you know, I can go through what I've done and how I became a makeup artist and things like that as well, if you're interested, or you know, things like Instagram, or how to grow your page, or what's worked for me, or what works for other people maybe, but I've not been able to do myself. So, you know, if you want any information like that, do let me know in the comments below, to let me know what kind of videos you would like to see, and then I will try my very best to actually do the videos that you want. Like I said, I'm not that comfortable in front of the camera myself, so I'm trying to avoid kind of like coming on camera. So, you know, I might be there for a few minutes or so, but I'd rather not be in the whole video. So as long as you guys are happy with that, do let me know, and I'll be happy to kind of like try and get some videos set up for you guys. So that's mainly what I want to speak to you about. I am going to be trying to upload on a weekly basis, more if possible. Just I need to get back into my routine, but inshallah I will be having a lot more content for you coming up in the next few weeks and months. So I hope you guys are happy with this. I'm trying my best to do as much as I can and give you as much information as possible, just to make it easier for you guys, because I know it's very, very expensive and very, very tough to find courses and learn this. And I've always said that you could do a course, but it's not going to be something that's going to improve your skills straight away. It all comes with practice. So if you guys are makeup artists and you're doing, you know, trying to do makeup or make it, or you are starting a makeup journey, it's all about practice, and inshallah it will all work out for you. So that's all I wanted to say in this particular video. So I'm going to let you guys watch the rest of the video, and inshallah please do let me know in the comments below under this video, and I will be taking on board your comments and suggestions, and inshallah planning some videos around that. So I'll leave you to watch the video, and inshallah I will see you soon. Take care, Allah Hafiz.